A small, nondescript publishing house started with religious zeal in Gorakhpur 100 years ago has become possibly India's biggest by volume, quietly and without any aggressive sales tactics. A non-profit publishing house that sells low-priced Hindu religious text, Gita Press, has now been awarded the Gandhi Peace Prize for the 2021 year by the government for community service. However, this decision by the centre received backlash from the Congress party and some other opposition parties, with senior Congress leader Jairam Ramesh criticizing the government for awarding the Gorakhpur-based publication, calling the decision a travesty. He added that it is like rewarding Nathuram Godse or Veer Savarkar. Meanwhile, the BJP has hit back at the anti-Hindu line taken by the Vadra Congress. The Gita Press owner have hit back at the Vadra Congress as well for politicizing this issue. Today we have Udit Goenka, who's the grandson of Gita Press founder, joining us live. Let's try and connect. All right, Mr. Udit Goenka, very good evening. And viewers would want to know your thoughts on the kind of controversy you are at the center of, with the Congress party criticizing the government for giving you the Gandhi Peace Prize. Firstly, thank you so much for inviting me. मुझे ये लगता है कि all of the politics that is being getting involved in the cultural aspects of the things should be completely avoided. Culture should remain its own independent identity, because all of us humans relate to being a part of some culture, and that's what makes us humans. So any politics that is getting involved in it should be completely avoided, because Gita Press was built with the foundation to just help the society selflessly, and including any kind of politics and comparing it to anything shouldn't be done, and it's completely not justified. Yes. Also, Mr. Goenka, your grandfather Jayadayal Goenka ji, if I'm right, and Mr. Poddar jo unke saath the, the kind of meticulous, selfless work they did with no monetary objective, the kind of service to the society they have done, to the cause of Hindu religion they have done. The Congress party thinks that just because the politics of the Congress party was not or is not attuned to the spread of Hindu faith, they think this is wrong. They are actually questioning the kind of selfless work the duo of Mr. Goenka, your grandfather, and Mr. Poddar did. You think that rest of the society is going to accept this Congress position? Can you recall some moments from your life where you can show, or through which you can show, the kind of commitment to preserving those Hindu texts that was done by your grandfather? So Gita Press was started back in 1923. Prior to that, the entire establishment was actually formed as Govind Bhavan, under Govind Bhavan Karyalay, which is something I don't know a lot of people know. Over there, the very first unit was actually bought for like 600 rupees, whether the very first printing unit that was bought. And the entire organization was built for non-profit from day zero. That means sabhi log jo bhi wo trust mein aaye the. Gita Press was formed after Govind Bhavan Karyalay, which was in West Bengal. Uske baad jo bhi log aaye the, combinedly they formed the trust, Gita Press Trust. And वो स्टार्टिंग से ही नॉन प्रॉफिट रहा है, स्टार्टिंग से एक ही एजेंडा रहा है कि वी नीड टू स्प्रेड आवर कल्चर टू द फॉलोइंग जनरेशन, एंड दैट इज हाउ वी ऑल गॉट टू नो अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन. आज के टाइम पे शायद ही कोई हिंदू घर होगा जहां पे आपको भगवत गीता ना मिले, राइट? दैट्स द काइंड ऑफ सेल्फलेस वर्क दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैव डन with absolutely no motive to make any money. Even right now, trust mostly donations पे and जो books sell होती है उस पे run होता है. That's it. And there is zero agenda to make any money. So that's why I feel कि जो काम गीता प्रेस ने किया है and जो पूरी टीम ने काम किया है, I think it shouldn't get criticized, it shouldn't get compared to anything. And please, there's only one request: do not involve any politics in culture.
पर वो जो कह रहे हैं कि ये नाथूराम गोडसे या वीर सावरकर को अवार्ड देने जैसा है, ये तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? मतलब एक अब खबरें आ रही हैं कि व्हेन महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन वाज असैसिनेटेड, जो पब्लिकेशन थे गीता प्रेस का, उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में उस समय लिखा नहीं, कल्याण में कुछ छपा नहीं। एक वो कारण बता रहे हैं, या दोनों गोयनका साहब और पोद्दार साहब जो थे, दे वर two of the 25,000 people who were arrested post the assassination of Mahatma Gandhi. ये कांग्रेस इस तरह के जो गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, it's not that Mahatma Gandhi had no difference of opinion with even say Sardar Patel, Jawaharlal Nehru, among others. So despite the fact that Mahatma had good equation or good relationship with Mr. Jayadayal Goenka and Poddar, and yet later perhaps developed some differences, the Congress party seems to be just sort of playing politics on this aspect alone. आपको लगता है कि ये थोड़ा दुखद है कि गोडसे और सावरकर से कंपेयर करने के लिए, जो अपनी राजनीति के लिए कंपेयर कर रही है कांग्रेस पार्टी? नो, डेफिनेटली थोड़ी सी सैडनिंग तो है, बट एक ही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज आप पॉलिटिक्स को और कल्चर को अलग रखो, बिकॉज ये कल्चर आगे जाके और बढ़ेगा। राइट, हमारी अगली जनरेशन आएगी, वो भी आज के टाइम पे जब हमारी कल्चर के बारे में पढ़ेगी, तो हमारा कल्चर और हमारा पॉलिटिक्स कभी मिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे के जनरेशन को काफी प्रॉब्लम्स होंगी फिर। और हम एक कल्चर से हम रिलेट करते हैं। सो आप जो पॉलिटिक्स करनी है, जिनको जो पार्टियों को पॉलिटिक्स करनी है, आप पॉलिटिक्स करो, बट उसको आप कल्चर में इंप्लीमेंट मत करो, उनको हमारे कल्चर में मत लाओ। हम हमारे कल्चर से ही हम हमारा हिंदुत्व फॉलो करते हैं, हमारा सनातन धर्म फॉलो करते हैं। तो प्लीज आप पॉलिटिक्स अलग रखो, ताकि हम हमारे कल्चर पे फोकस कर सके और हम हमारा कल्चर ग्रो कर सके। जी, आपकी कल्याण मैगजीन आई बिलीव अभी भी आती है ना, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि आप एडवर्टाइजमेंट न लें, और अभी तक नहीं लेते हैं? नो, एब्सोल्युटली, देयर इज एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट। वहां पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। इट्स अ नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट, ठीक है? तो वहां पे कोई भी प्रॉफिट्स नहीं जनरेट होता है, एंड जो भी होता है वहां पे वापस सब पुस्तकें बनती है, सब प्रिंट होती है, एंड सारी की सारी बुक्स, किताबें आप आज के टाइम पे भी देखोगे तो इतनी सस्ती है। राइट, 10 रुपए की बुक, 15 रुपए की बुक, 30 रुपए की बुक, 40 रुपए की बुक, ठीक है? तो बुक पुस्तकें इतनी सस्ती है। द एंटायर गोल वॉज कि सभी लोग वो पुस्तकें, वो किताब एफोर्ड कर सके, उनको खरीद सके, एंड इसी के लिए प्राइस इतना कम है। एंड यही प्राइस से, यही जो सेल्स होती है, इसी से वापस से और पुस्तकें बनती है, ताकि और लोग हमारी कल्चर को अडॉप्ट कर सके, हमारे कल्चर को पढ़ सके। और आज के टाइम पे मैंने जैसे पहले बताया था कि ऐसा कोई हिंदू घर नहीं होगा जहां पे आपको भगवद गीता नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये भगवद गीता की वजह से ही आज के टाइम पे हमारा कल्चर अलाइव है। राइट, हमें पता चल रहा है कि क्या हुआ है, क्योंकि मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, ही डाइड इन 1965। तो मैं कभी उनसे मिला नहीं हूं, बट मैंने मेरी फैमिली से उनके बारे में सुना है। एंड व्हेन आई रीड भगवद गीता, मुझे पता चलता है कि क्या वैल्यूज थे उनके, द काइंड ऑफ वैल्यू एंड द काइंड ऑफ वर्क दैट दे डिड। मुझे ये सब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे माता पिता, इनसे पता चला है। सो दिस इज व्हाई आई कीप सेइंग कि आप पॉलिटिक्स अलग रखो। आपको पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिक्स करो, बट पॉलिटिक्स को आप कल्चर में मत लाओ। राइट, obviously, you know, the same Congress party which is criticizing this award, their government in 1995, I believe, released a postage stamp also in the name of Mr. Jayadayal Goenka. Okay, thank you so much, Udit Goenka, for joining us, the present trustee of Gita Press, which has been awarded Gandhi Peace Prize, and the Congress party finds problem with that. Thank you so much.